Good evening to all of you. Am I audible? In last class, we have discussed about fascism in Italy. Basic concepts and ideas we have already discussed, that what were the reasons that were responsible for the growth and development of this ideology in Italy. Okay. So today we are going to first revise the concepts with the help of some slides. Clear? And then I will enter into the new topic, that is rise of Nazism. Okay. So in last class I have discussed all the features of fascism. Okay, so let's do a quick revision of these topics and then we will enter into the next topic, that is rise of Nazism under the leadership of Hitler in Germany. Both these two topics are very much important because your main syllabus clearly mentions that we need to study what different ideologies like capitalism, socialism, Nazism, fascism. We must know about these ideologies, and these topics are equally helpful in some other areas of GS also. Okay, in optionals also, in some other optionals also, you will find that these topics are frequently mentioned. Okay, you will find this in PubAd also, PSIR also, history optional also. So these topics are very much important. So let's have a quick revision of these topics. Okay. Now, in this revision, I have already discussed with you that generally we use a term, and the term is fascist Italy. Okay. So this word fascist Italy, if you find that any fact or information is useful or helpful, you may write down. But all the important informations, okay, I have already okay discussed with you. जो भी important है हम कर चुके हैं. So here we are going to discuss the themes only. But if you consider some facts important, you just write down. There is no need to prepare all. I have already discussed the essence of the entire concept. So this is fascist Italy. So we use this term fascist Italy for Italy, okay, to describe the kingdom of Italy when it was governed by fascist party. What is the name of that party? The name of that party was National Fascist Party, and it governed Italy during this period. 1943-45. Basically, the party changed its form and orientation at different time interval. Okay, name will also be changed here, but in general, this is known as Fascist Party. From 1922, the regime of this party starts, and you all know that by this Paris Peace Settlement, there was some dissatisfaction. 1919 was the Paris Peace Settlement, and by this Paris Peace Settlement, there was some dissatisfaction. Plus, Italy was also suffering from the war. Okay, you can say that crisis, and this all led to the development of this ideology. Now, you already are aware of these two personalities. This is Mussolini, and this is Hitler. Okay, we all know about these personalities. Now, Italian fascism, in simple, we use this word fascism. Okay, so this is an ideology which developed in Italy, and this is associated with these parties. For example, look at the name of the parties, how the party evolved. Previously, it is what? Fascist Revolutionary Party in 1915. There is no need to write, I am just discussing with you. That nationalist fascist party will not come all of a sudden. There is already party, that is Revolutionary Fascist Party. And what is happening? Okay, this party was very much sympathetic to the demands of the workers. हमेशा ध्यान रखना है कि any party will become successful if it will gain support of majority classes. And what is the majority class? The workers, the peasants, they are the majority class. And when you are advocating for this majority class, generally we understand that we are talking in sense of socialism or communism. But here the form of socialism, the form of communism that Italy and Germany were advocating is different from the form of socialism, the form of communism that was present in Russia. ठीक है, यहाँ पे वो थोड़ा नेशनलिज्म का एलिमेंट बहुत ज़्यादा है. Got it? In Russian Revolution, there was an international effort for the efforts to make international Comintern. Okay, the communist movement or the socialist movement in Russia was an international movement in this sense. Okay,
They tried to promote this ideology worldwide. But Nazism and fascism में ऐसा कोई impact नहीं दिखता. There is nothing like this. ठीक है ना? So socialism, communism is an international movement. Capitalism is in the form of international movement, but it's not. Okay, the party changed its forms and orientation. This is Fascist National Party, 1921, and now Mussolini was the leader, and this party ruled Italy during this period. Later, again the party changed its orientation. It became Republican Fascist Party. Okay, 1943 to 45 it ruled, and post-war Italian social movement and neo-fascist movements are also there. But generally, we will use this term fascist party. We will use the name of one leader, that is Mussolini. These are the technical things that I have discussed with you. Because while reading books, we came across the name of different parties and we get confused. So we must know that we should not be confused. We are commonly using the name of a party, that is fascist party. That is point here. Now, Italian fascism. This I have already discussed with you. Okay, what were the root causes for this ideology, for the development of this ideology? We all know that it was rooted in Italian nationalism. Yes, nationalism was an important factor. Just after the unification of Italy in 1870-71, we all know that a kind of aggressive nationalism was being promoted during the age of new imperialism. मैंने डिस्कस किया आपके साथ, right? Conscription system was there. Okay, and it was a matter of pride to have more and more colonies under your political control. आपके पास जितनी ज़्यादा colonies होंगी, so this will be a matter of self-respect and pride for the nations. So this all was happening. Okay, desire to restore and expand Italian territories. Why people of Italy are having this desire to restore, to expand Italian territories? Because they consider themselves successor of the Holy Roman Empire. This is also related to the previous lectures. And deemed necessary for a nation to assert its superiority and strength. And okay, it means that they were trying to assert their superiority and strength. And we all know that between this period, 1872 1914-15, we all know that all powerful nations of Europe were trying to assert their okay supremacy. That was the age of new imperialism. Okay, Italian fascists claim that modern Italy is the heir or successor to the ancient Rome, the same concept that I've discussed with you, and its legacy and historically supported to the creation of an Italian empire to provide a spatio vitale, that is living space for colonization by Italian settlers and to establish control over the Mediterranean Sea. This is a basic idea. It means they are talking about controlling territories and expansion of their territories. Okay, they are talking in this sense, right? Got this idea? Mussolini's rise to power were socio and economic conditions in Italy. I've already discussed with you. What is socio and economic conditions? War crisis. ये आपने notes में लिखा भी है that after World War I there was post-war economic crisis. Okay, Italy was a member of victorious side. We all know that Britain, France, Russia, and Italy. These were the victorious group. Italy was a member of the victorious side during the war. Its participation had been costly and disproportionate to its size and wealth. Italy participated. There will be military expenses, पैसा खर्च होगा उसका, right? और कुछ ज़्यादा ही खर्च हो जाएगा, उसके औकात से ज़्यादा खर्च हो जाएगा. This will happen. Okay, and this is one reason of dissatisfaction, that there was military expenses and we are unable to get, okay, or you can say that we are not, okay, properly compensated, okay, from the resources or you from the war compensation amount and the territories, right? It here it has, there is a data that Italy spent about $15 billion in the war and lost almost 6 lakh. $15 billion आपने military expenses पे खर्च किए and 6 lakh people were died and you are not properly compensated. What will be the result? Dissatisfaction. Okay, you have spent $15 billion. What will be the result? Economic challenges. Crisis तो होना ही है. Inflation, lack of essential goods, supply, commodities, this all will happen, and this all was happening in Italy. And Italy received what? Fewer rewards. It means Italy was not properly compensated in this Paris peace settlement than it expected during post-war negotiations with its allies.
जो एक्सपेक्टेड था उससे कम मिला, दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विथ यू, एंड इटली वाज डिससेटिस्फाइड ड्यू टू दिस रीजन. Now, these factors increase the unpopularity of Prime Minister Vittorio Orlando and the Italian government in Rome. The government will become unpopular because the government failed to negotiate. It is the task of the government that international platforms पे अपनी country की बात को मजबूती से रखना, but here the government failed to negotiate. So the people will be dissatisfied with this government, and who will, okay, take advantage of all this opportunity? Who is going to take advantage? Mussolini is going to take advantage of all this opportunity, and this he did very smartly. Okay, as economic conditions worsened, it means economic conditions were deteriorating day by day. Popular discontent increasing, it means the discontent of the people. लोगों का जो discontent था, गुस्सा था, वो लगातार क्या हो रहा था, बढ़ता जा रहा था गवर्नमेंट से. एंड इटालियंस बिगैन टू लुक फॉर न्यू अल्टरनेटिव. अब इटालियंस को लग रहा था कि इस गवर्नमेंट के बस का कुछ नहीं है, वी नीड सम न्यू अल्टरनेटिव, कि हाउ टू रीस्टोर द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री, कैसे करें हम अपने देश को और बेहतर बनाए. दिस वाज द चैलेंज हियर. नाउ वर्कर्स एंड पीजेंट्स, नाउ दे वर अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स सोशलिज्म, and that I have already discussed with you. There was a danger for the rise of communism in Italy. Or this is majority class, workers and peasant. When they will be attracted towards socialism, what will happen? Who will fear? The capitalist class will fear. The conservatives will fear. The ruling class or the royal families will fear that we may lose our privileges if these things will be continued. हमें नुकसान हो सकता है. This will happen. And what we see that even some attempted to enact their own reforms, such as the appropriating and collectivating factories and the states of rural landowners. इसका मतलब ये भी शुरू हो गया है कि फैक्ट्रीज या रूरल लैंड ओनर्स, इन पे कंट्रोल स्टैब्लिश करेगा दिस मेजॉरिटी क्लास, पीजेंट्स एंड वर्कर्स. Will it create a situation of chaos? Yes, it will create a situation of chaos. Now the capitalist class, okay, landowners and middle class Italians, or you can say that conservatives, capitalist class or the conservatives, जिनके पास पैसा है, जो सोशलिज्म और कम्युनिज्म के स्प्रेड से डर रहा है. गवर्नमेंट कुछ कर नहीं पा रही है, द गवर्नमेंट इज अनेबल टू सॉल्व दिस क्राइसिस. सोशलिज्म का इम्पैक्ट बढ़ता जा रहा है. द पीपल आर ऑल्सो ट्राइंग टू establish their control on factories and all this. In this situation, the capitalist class will look for help towards another group. लोहा लोहे कोई काटता है, और दूसरा ग्रुप बैठा हुआ था, उसका नाम क्या था? फासिस्ट ग्रुप. उसने कहा हमें फंडिंग करो, हम रोक देंगे. वी विल बी एबल टू स्टॉप द ग्रोइंग डेंजर ऑफ कम्युनिज्म इन इटली. उसने कहा हमें फंडिंग करो, हम रोक देंगे, इतनी सी बात है. एंड इन दिस वे द फासिस्ट गॉट द सपोर्ट ऑफ capitalist class and conservative class. And the leader of these fascists is what? Mussolini. और सबसे बड़ी बात, Mussolini was previously a socialist. पहले वो सोशलिस्ट ही था. कहा फंडिंग करो और मैं अपना प्लान चेंज कर दूंगा, प्रोग्राम चेंज कर दूंगा. ठीक है ना. नाजिज्म विल ऑल्सो डू द सेम. पहले वो पीजेंट और वर्कर्स के सपोर्ट पे चलते हैं, और जैसे ही उनको कैपिटलिस्ट की फंडिंग मिलती है, दे विल चेंज देयर पॉलिसीज एंड programs. Clear? Looking at the opportunity, they will change their policies and programs. This is very interesting. Now, 1919 fascists were earlier small, but they will, when they will get funding and support, they will become more popular. Okay, this has been written here. At first, the group advocated a relatively progressive agenda. Gradually, okay, broad economic reforms की बात इन्होंने की, और फिर धीरे धीरे जिन रिफॉर्म्स की बात ये कर रहे थे, अपने ही रिफॉर्म्स और अपने ही प्रोग्रेसिव एजेंडा को क्या करने लगे. when they will become popular, देखो, first they talk about progressive agenda, people attracted towards them. Okay, then they will talk to bring liberal reforms in the economy, people were attracted towards them. And when they became powerful, they started discarding what they were saying themselves. जो आपसे वादा कर रहे थे, अपने ही पॉलिसी को, अपने ही प्रोग्राम को, अपने ही वादे को क्या करने लगे. They started discarding as they become powerful. जैसे जैसे पावरफुल होते गए, अपना ही प्रोग्राम पॉलिसी बदलने लगे. This happened. Soon fascist group known as the black shirts, आज भी मैंने black shirt पहन लिया, ठीक है, black shirts began to attack rival group, most notably socialist. ठीक है. अब इनका टारगेट कहाँ हो जाएगा? फासिस्ट का टारगेट सोशलिस्ट. Who is funding and supporting fascist? Capitalist. फंडिंग यहाँ से मिल रही है. इनका टारगेट क्या है? किसको भगाना है?
सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट को इटली से भगाना है. So this is ideological conflict between two group. One is what? Fascist. The other is what? Socialist and communist. समझ पा रहे हो? पहले क्लास में, पिछली क्लास में डिस्कस इसलिए मैंने किया था और तब स्लाइड यूज कर रहा हूँ कि आप थोड़ा बेटर कनेक्ट कर पाओ. ठीक है. नाउ द यूज ऑफ वायलेंस. यस दे डिड. ओके. व्हाई दे यूज्ड वायलेंस? टू मेक द सोशलिस्ट वीकर. क्योंकि फासिस्ट का मेन टारगेट कौन है? सोशलिस्ट. And accomplishment that won them support among the upper and middle class. Upper and middle class का support मिला. Even army and police, they all supported. And when they got support, okay, what will happen? Mussolini will be able to develop an army of about 50,000 fascists or the black shirt. He will march into Rome, okay, in 1922, and he will take control of the government, okay, and no one is there to stop Mussolini. ठीक है. उसके पास खुद का अपना एक कैडर है, 50,000 ब्लैक सोल्जर्स का, एंड दे विल टू कंट्रोल ओवर द रोम. दे विल टू कंट्रोल ओवर द रोम. दिस विल हैपन, राइट? देन इट प्रोमोटेड अ कॉर्पोरेटिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम. आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विथ यू. लास्ट क्लास के लेक्चर को देखो. कॉर्पोरेट सिस्टम इन इटली, डिस्कस्ड और नॉट? कॉर्पोरेट सिस्टम वेयर बाय एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई syndicates were linked together. Employers and employee, these syndicates were linked together, okay, in association that they will collectively work for the nation's economic prosperity. Okay, there should not be conflict. Strikes नहीं होने चाहिए. Workers के भी सारे rights को accommodate करेगा. Employers organization, employees organization, association, they will come together. They will help and support each other, and in this way they will work for the economic prosperity of the nation. This is the plan. The economic system intended to resolve class conflict through collaboration between the classes. ध्यान रखो. Communism talks about class conflict, and here fascism talks what? To resolve class conflict. Communism में क्या बात की गई है? Class conflict. Class conflict is inevitable. कहा कि एक क्लास हैव्स है, दूसरा क्लास हैव नॉट्स है, और दोनों के बीच में क्लास कॉन्फ्लिक्ट होना ही होना है. बट फासिज्म इज डूइंग व्हाट? ब्रिंगिंग कोऑपरेशन बिटवीन दीज टू क्लासेस. Gandhi believes in class conflict or not? The answer is no. Gandhi does not believe in class conflict. Gandhi also believes in the idea of class cooperation. And fascism is also believing in the idea of class cooperation. Capitalist, workers, employers, employee, association should work together. ठीक है. दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होंगी? डिसरप्ट होंगी. डिसरप्ट होंगी तो इससे नेशन की इकोनॉमिक प्रोग्रेस, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी वो क्या हो जाएगी? अफेक्ट हो जाएगी. तो जरूरत क्या है? क्लास कॉन्फ्लिक्ट की या क्लास कोऑपरेशन की? क्लास कोऑपरेशन की. और भगाना भी है कम्युनिज्म को, तो क्लास कॉन्फ्लिक्ट वाले आइडिया को क्या करना होगा? रिजेक्ट करना होगा. ओके, दिस इज मुसोलिनी. नाउ फासिज्म बिगैन टू अकोमोडेट इटालियन कंजर्वेटिव्स आल्सो इन देयर पॉलिटिकल एजेंडा. जहां भी फासिस्ट आइडियोलॉजी होगी वो क्या करेगी? कंजर्वेटिव्स को अपने साथ लेके चलेगी. शुरू में रिवॉल्यूशनरी है, बट बाद में ये किसको साथ लेके चलने लगते हैं? कंजर्वेटिव्स को. एंड व्हेन दे विल टेक द सपोर्ट ऑफ कंजर्वेटिव्स, ओके, देखो पहले जिस चीज की बात करते थे, धीरे धीरे वो सारे आइडियाज को क्या कर दिया? चेंज कर दिया. प्रीवियसली दे वर टॉकिंग अबाउट एंटी क्लैरिकलिज्म, रिलीजियस एलिमेंट्स को डिस्कार्ड करने की बात कर रहे थे. अब वो क्या आ गए? इन सपोर्ट ऑफ कंजर्वेटिव, इन सपोर्ट ऑफ रिलीजियस एलिमेंट्स. कंजर्वेटिव फोर्सेस भी सपोर्ट करेंगी, कैपिटलिस्ट क्लास भी सपोर्ट करेगा, देन दे विल बिकम पावरफुल. So they are changing their policies. Now what is happening here is that, okay, देखो, first they were in the support of free enterprises. Free enterprises को support कर रहे थे, businesses को, capitalist class, right to property, इन सब को support किया. Got it? Next, accepting the Roman Catholic Church. किसको accept कर लिया? Roman Catholic Church को. And पहले वो क्या कहते थे? एंटी क्लैरिकलिज्म. ठीक है, रिजेक्ट कर दिया, और यहाँ क्या कर लिया? रोमन कैथोलिक चर्च को एक्सेप्ट कर लिया. ठीक है. नेक्स्ट, द मोनार्की एज इंस्टीट्यूशंस इन इटली, इवन द सपोर्टेड मोनार्की. इससे क्या होगा? जो रॉयल एलिमेंट्स हैं एंड द क्लास विच क्लास इज कॉल्ड रॉयल क्लास, द सपोर्टर्स ऑफ द रूलर, द किंग हिमसेल्फ, दे विल कम इन सपोर्ट ऑफ मुसोलिनी. एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट
द किंग ऑफ इटली केम इन सपोर्ट ऑफ इट मुसोलिनी. उसके पास देयर वाज नो एनी ऑप्शन बिकॉज कम्युनिज्म वाज बिकमिंग पॉपुलर. तो हु कैन प्रोटेक्ट इटली फ्रॉम कम्युनिज्म? मुसोलिनी. तो किंग भी आके क्या किया, पैरों में पड़ गया, मुसोलिनी भाई ठीक है तुम ही बचाओ कम्युनिज्म से. इन दिस वे मुसोलिनी कम्स टू पावर. गॉट इट? इटालियन कंजर्वेटिव क्लास, कंजर्वेटिव एलिमेंट्स. ठीक है. अच्छा बताओ, जहां पे भी कंजर्वेटिव एलिमेंट्स पॉपुलर होने लगेंगे फिर वो डिसाइड करने लगेंगे कि फैमिली सिस्टम और वैल्यूज कैसे होनी चाहिए. ठीक है. गर्ल्स को किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, गर्ल्स की लाइफ कैसी होनी चाहिए, गर्ल्स के मोरालिटी के स्टैंडर्ड क्या होने चाहिए, फिर ये कौन तय करेगा? कंजर्वेटिव एलिमेंट्स. इराक में चले जाओ, अफगानिस्तान में चले जाओ, कंजर्वेटिव एलिमेंट्स विल डिसाइड. ठीक है, कि वुमेन को कैसे रहना चाहिए. द सेम इज हैपनिंग हियर आल्सो. Conservative elements will gain popularity with the support of Mussolini and they will start promoting family values. और family values को लेके चलने की पूरी जिम्मेदारी किस पे होती है? Women पे. They will start promoting family values. Policies designed to reduce the number of women in the workforce. Workforce पे women का नंबर क्या करो, कम करो. लड़कियों औरतों की जिम्मेदारी क्या? घर संभालना. This is conservative idea. गॉट इट? यही तो है कंजर्वेटिज्म. किसी एक सोशल क्लास के फ्रीडम को क्या कर देना? एनक्रोच कर देना, कम कर देना. ठीक है. और आपको लग रहा है कि अगर हम वुमेन के फ्रीडम को कम कर देंगे, कन्फाइन कर देंगे, एनक्रोचमेंट कर देंगे उनके राइट्स का, तो इससे हमारी फ्रीडम बढ़ जाएगी. ये बेवकूफ़ी है. एंड दिस इज कॉल्ड conservatism. Now what they are doing? They are limiting the role of women. They are just reducing the number of women workforce in the society. Okay, limiting the women's role to that of mother only. कि लड़कियों का काम क्या है, women का काम क्या है? घर में बच्चे संभालना. The role was confined to the role of mother only. This is fascism. Fascism को सिर्फ इससे नहीं समझना. It was a totalitarian regime. Obviously it will put restrictions on the freedom of women also. मेरी बात समझ गया ना? This is fascism. This is called fascist ideology. If as a person, if I start talking like this, that women's role must be confined within the domestic boundaries, it means that I am, okay, a person whose mentality is sick. I am a person who is having a kind of fascist mentality. यही है fascist mentality, conservatism. Now, the fascist ban literature on birth control. Birth control is what? If you are just asking the people, or if you are just you can say that promoting awareness among the people to birth control to limit the number of children, it is good. But what fascists are doing? Okay, ban the literature on the birth control. जितना ज़्यादा बच्चों का जन्म होगा, they will become what? Soldiers. क्योंकि इनकी पॉलिसी क्या है? They want to promote war for them. That a nation and its citizens should always be ready to fight the war. Peace is absurd. Shanti bakwas hai. This is fascist ideology. Now, what we see that the fascists ban literature on birth control and increased penalties for abortion. ठीक है, abortion भी नहीं करवा सकते. Why they are doing this? Because they want soldiers to fight the war. Because the nation is following what? A kind of aggressive foreign पॉलिसी. इंडिया की फॉरेन पॉलिसी क्यों है? पीसफुल को एग्जिस्टेंस. ओके, वी नेवर से दैट पीस इज एब्सर्ड. वी प्रमोट पीस. हम पीस को बढ़ाने की बात करते हैं. ठीक है. बट हियर व्हाट वी सी दैट पीस इज एब्सर्ड. दिस ऑल इज हैपनिंग, डिक्लेयरिंग बोथ क्राइम्स अगेंस्ट द स्टेट. इट मीन्स अगर आपने अबॉर्शन कराया, सो इट इज अ क्राइम, क्राइम अगेंस्ट द स्टेट. इफ यू आर प्रोमोटिंग अवेयरनेस अमंग द पीपल टू लिमिट द बर्थ कंट्रोल, इट इज अ क्राइम अगेंस्ट द स्टेट. ये स्टेट के खिलाफ क्राइम हो गया. दिस इज फासिस्ट मेंटालिटी. गॉट इट? ये फासिस्ट मेंटालिटी है. नाउ व्हाट वी सी, okay, there is a statement that fascism would like to be conservative, but it will by being revolutionary. It means there are some revolutionary elements, but overall it is conservative idea. This is the idea. The fascists supported revolutionary action, but उनके लिए revolutionary action कुछ और मतलब रखता है. Okay, now fascists identified their primary opponents as the majority of socialists. इसका मतलब फासिस्ट का एक क्लियर एजेंडा था कि हमारा जो सबसे प्राइम ओपोनेंट है, सबसे बड़ा दुश्मन है, वो कौन है? सोशलिज्म. ओके,
तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, फासिज्म एंड सोशलिज्म on the left. The fascist and Italian political right held common ground. Both held Marxism in contempt, discounted class consciousness, and believed in the rule of elites. That I have already discussed. Believed in the rule of elites means what? Only some selected individuals should have the right to rule and administer. All people don't have such quality. So if you are talking about representative institution, this is not good. रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस की मत बात करो, वोट की बात मत करो. ऐसे तो कोई भी आदमी बन जाएगा लीडर, कोई भी आदमी आके बैठ जाएगा पार्लियामेंट में जिसके पास एडमिनिस्टर करने का, रूल करने का, है ना, क्वालिटी हो या नहीं. इनका मानना है कि वो क्वालिटी कुछ ही लोगों के पास है और वो हम लोग हैं. तो आप कौन होते हो डिसाइड करने वाले? ठीक है, कि ओनली सम सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स हैड द राइट टू रूल. इट इज अ काइंड ऑफ रूल ऑफ एलीट क्लास. क्लियर? And they have forcefully hijacked the power in Italy. That is fascism. Got it? Okay. This is the point here. Okay. Now, this is details. Okay. This point is important. Mussolini declared himself as a dictator, assuming full responsibility over the government, and announced the dismissal of parliament. Parliament की कोई ज़रूरत नहीं है. He declared himself as a डिक्टेटर, खुद को डिक्लेयर कर दिया डिक्टेटर. In 1925 to 1929, fascism steadily became entrenched in power. Opposition deputies were denied access to parliament. अपोजिशन के लोगों को पार्लियामेंट में एंट्री क्या कर दिया? बंद कर दिया. तो पार्लियामेंट का मतलब क्या रह गया? अपोजिशन डेपुटीज, रिप्रेजेंटेटिव्स वेर डिनाइड एंट्री इन पार्लियामेंट. कोई भी अपोजिशन पार्टी और उसके मेंबर की पार्लियामेंट में एंट्री अलाउ नहीं थी. ये अकेले ही बैठेंगे पार्लियामेंट. दिस वाज द आइडिया. नाउ censorship was introduced. Strict censorship was introduced. Okay, and in this way, okay, in 1925, you can say that an order was introduced in which Mussolini was ultimately responsible for the king of Italy only. ये कहा गया कि मुसोलिनी की जवाबदेही जनता के प्रति नहीं है. Mussolini is not, you can say that, responsible, okay, towards people, but he will only take orders from the king. वो केवल, लेकिन धीरे धीरे वो क्या करेगा? किंग को भी साइड कर देगा. Got it? He will become dictator. ठीक है, किंग के पास कोई ऑप्शन नहीं है. किंग was the weaker. Okay, this is the point here. Okay, Mussolini aspired to expand Italian influence through the accumulation of new colonies and foreign territories. The nation's foreign policy was aggressive. They want to fight war. Fight war for what purpose? War क्यों लड़ना है? Because Mussolini was saying that we are successor of Holy Roman Empire. ठीक है, so we have to bring back the past glory of Italy. Past glory of Italy. Italy, Holy Roman Empire में बहुत सारी territories हुआ करती थी. So we will bring back the past glory of Italy. It means we are going to focus on what? Expansion of Italian territories. We will also establish control over the colonies. आप बताओ, बाल्कन स्टेट्स के डिसइंटीग्रेशन के बाद ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरीज पे कंट्रोल करे पावरफुल नेशंस ऑफ यूरोप. दिस वाज द रीजन फॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. एंड अगेन द सेम मेंटालिटी कि वी विल कॉन्क्वर न्यू टेरिटरीज, वी विल एस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर न्यू कॉलोनीज. व्हाट विल हैपन? इट विल प्रमोट वॉर. ठीक है, ये वॉर को ही तो प्रमोट कर रहा है. ओके, और एक और मज़ेदार बात है, व्हेन इटली स्टार्टेड फेसिंग सम चैलेंजेस एट डोमेस्टिक लेवल, दिस वाज द ईयर 1930s की बात है, right? 1932 के बाद Italy started facing some domestic challenges, and in order to divert the attention of the people, what Mussolini will do? Mussolini will start war and aggression on other countries. ये भी फासिस्ट आइडियोलॉजी है कि जब आपके नेशन में इकोनॉमिक प्रोग्रेस या डेवलपमेंट इश्यूज, ठीक है, ये ज़्यादा आ जाए, चैलेंजेस ज़्यादा आ जाए, देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस ऑन इकोनॉमिक फ्रंट, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर, राइट? In that situation, what will happen? The popular discontent of the people will increase. लोग dissatisfy होंगे. तो उसी मौके पे तुम क्या करो? Aggression, foreign aggression, war. इससे क्या होगा? The attention of the people will be diverted, and the people are already filled with, okay, aggressive nationalism. War की बात सुनते ही वो कहेंगे ठीक है, okay, we will take one meal one day, but we will fight.
बाकी सारी चीज भूल जाएंगे. एंड मुसोलिनी वाज वेल अवेयर ऑफ दिस फैक्ट. गॉट इट? सो दिस इज मुसोलिनी. ओके, सो इज लीडिंग, ओके, the Italy towards the war. 1935, Italian army marched into Abyssinia. This I will discuss later. And it was declared a colony of Italy. 1935 में इटली ने क्या किया? एबिसीनिया, दैट्स इथोपिया ऑल्सो, वहाँ अटैक किया. एंड नाउ इट वाज बिकम कॉलोनी ऑफ इटली. अफ्रीका में जाके अफ्रीका की टेरिटरी को अपनी कॉलोनी बना लिया. एंड व्हाट अबाउट लीग ऑफ नेशन? लीग ऑफ नेशन वाज अ म्यूट स्पेक्टेटर. लीग ऑफ नेशन कुछ कर नहीं पाया. That's why we say that these fascist nations, Germany and Italy, okay, showed aggression, and League of Nations failed to do anything. ठीक है? Why League of Nations failed? This also we will discuss. Concept is revised. Revise हो गया, पहले से better समझ में आया, आपको ideas पता, principles पता है. Now I am going to start another topic, and that is, okay. So I think that PPTs should be used in case of display of maps, map दिखाना हो, or for revision. PPTs should not be used for teaching. Okay, for particular subjects it is true, but for all subjects this is not good. Okay, because this will disrupt the growth of independent thoughts of the students. ठीक है, PPTs revision के लिए यूज कर सकते हो, मैपिंग के लिए यूज करो, प्लस इकोनॉमी है डाटा के लिए, साइंस टेक में, ज्योग्राफी में यू कैन यूज PPT. ओके, अब आपको समझ में आया? इफ आई आस्क यू टू राइट, ओके, 150 words on fascist ideology, or 150 words on the question that growth and development of fascism in Italy, how Mussolini came to power, you can write all the answer of these questions without any writing practice. लिख के देखना, बिना किसी टेस्ट सीरीज के, बिना राइटिंग प्रैक्टिस के आंसर लिख दोगे. Okay, and why I am saying this, all of you can write the answer, because now the thoughts have developed in your, you can write the answer of this question. नहीं यकीन हो तो कोई क्वेश्चन का आंसर लिख के देखना. ठीक है, तो जरूरी क्या है? टू डेवलप द थॉट्स, टू डेवलप द आइडिया. और तभी तो आप इंटर रिलेट कर पाओगे यार, इंटर कनेक्ट कर पाओगे थीम्स को. वैसे होगा ही नहीं, बस रटा रटाया वाक्य है, हर आदमी आके कहता इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच चाहिए यूपीएससी. कहाँ से आएगा भाई? तुम्हारा खुद का इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच नहीं है, बच्चा कहाँ से डेवलप करे? ओके, सो दिस वी नीड टू नर्चर. इसमें टाइम लगता है, इट विल टेक टाइम. गॉट इट? नाउ the next topic is rise and growth of, right, rise and growth of Nazism in Germany. Rise and growth of Nazism in Germany. So first I am going to discuss with you, with the help of board work, essence of this entire theme. And whatever I will discuss here, you will make running notes. And lastly, we will revise the concepts with the help of the slides. ठीक है? So you will make running notes, because these things you are going to use in your answer. Okay? Rise of Nazism in Germany. Okay? So what is the concept here? The concept is, we all know about this, that the First World War, keep drawing the sketches, 1914 to 1918, this is what? World War One. This is World War One. 14 to 18 is World War One. Clear? Now, after this World War One, what happened? Paris Peace Settlement, and the year is 1919. Okay, and there are two group of nations. We all know this: Group One and Group Two. In Group One, there is Britain, France, US. This is Big Three. This is what? Big Three. If you will include Italy here, okay, so this will become what? Big Four. Italy को include कर दिया तो क्या हो जाएगा? This is Big Four. Plus there is one more country, that is Russia. We all know this. Okay, so this is what? Victorious nations. This is the group of victorious nations. PFR supported by US, later supported by Italy. Now Germany was among defeated group of nations. Germany was among defeated powers. Germany was among defeated powers. We all know this. And in Paris Peace Settlement, what I discussed, that according to War Guilt Clause, who was held responsible for the outbreak of First World War? The sole responsibility, Germany was held
solely responsible और accountable for फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और यहीं पे पहली गलती हो गई। वॉर के लिए किसी भी एक आदमी की जिम्मेदारी नहीं तय की जा सकती है, बट हियर जर्मनी वॉज हेल्ड सोलली responsible, Germany was held solely responsible or accountable. Germany was held solely responsible or accountable for outbreak of World War One. Solely responsible. उसके बाद क्या हुआ? Financial restrictions were imposed. Clear? Heavy war compensation amount was imposed. Germany had to face territorial loss. Various military restrictions were also imposed on Germany. We all know this. And Germany was forced to sign that treaty. It was a unilateral imposed treaty. The opinion of representatives of Germans was not taken. You are defeated power. Okay. Your opinion will not be respected. Okay. So they were forced to sign the treaty. So here what we see is that German German representatives were forced to sign Paris Peace Treaty. German representatives were forced to sign Paris Peace Treaty. They were forced to sign. So it was a kind of unilaterally imposed treaty. It was a kind of unilaterally imposed treaty. It was a kind of unilaterally imposed treaty. The provisions of Treaty of Versailles. जर्मनी के साथ जो ट्रीटी हुई थी उसका नाम क्या था? That was Treaty of Versailles. You all know this. So the provisions of Treaty of Versailles were fair or not fair? Not fair. Just or unjust? Unjust. The war compensation amount that was imposed on Germany, it was beyond the Germans' ability to pay. ये जर्मनी के औकात से बाहर का अमाउंट था. Okay. So what is happening here? France took revenge. And France thought that we have to design the provisions of treaty against Germany in such a manner that Germany should be brought on its knees so that it could never raise its head in future. जर्मनी को घुटनों के बल ला के खड़ा कर दो जिससे कि जर्मनी भविष्य में अपना सर ना उठा सके. This is the idea. To bring Germany on its knees so that Germany could never raise its head in the future. This was the purpose, obviously. Okay, this is an act of revenge. And an act of revenge will do what? It will invite counter revenge. Act of revenge से क्या होगा? Counter revenge. So this was an act of revenge. So if someone says that the seeds of Second World War were present in the provisions of Treaty of Versailles, so this is the meaning. The seeds of Second World War were present in Paris Peace Settlement. This is the reason. Got it? Idealism of US President Woodrow Wilson was ignored. वो कह रहा था peace, neutrality. Okay? यही तो कहा था वुड्रो विल्सन ने कि treaty provisions should be designed in such a manner that they should be neutral. Neutrality को ध्यान दो. ठीक है ना? But ऐसा हुआ नहीं. This all was happening. Now what we see here is that who came here to sign this Paris Peace Treaty? ये भी बड़ा interesting सा वाक्या है. You will now be knowing that why Hitler promoted the idea of anti-Semitism, कि Jews को kill करना है. ये भी बड़ा interesting concept. देखो क्या हुआ. First World War is over. First World War is over. And Germany was defeated. Germany was defeated. This is Germany. Now the king of Germany fled to Holland. ये भाग गया, जाके छुप गया इधर. The king of Germany fled to Holland. ठीक है. Kaiser William II. He was the ruler. ये वही है जो बिस्मार्क की डिप्लोमेसी की ऐसी तैसी कर दिया था. Right? So Kaiser William II, read this, the king of Germany, that was Kaiser William II, fled to Holland. ये हॉलैंड भाग गया.
whatever I am discussing here on board work, that is the essence and the filtered content. ये बात समझ जाओगे तो कोई भी कंटेंट समझ जाओगे. Got it? Okay. Fled to Holland. Now what will happen? Ruler has fled. So you need to have, okay, आपको अपना एक ऑल्टरनेटिव पॉलिटिकल सिस्टम तो डिजाइन करना पड़ेगा ना, राइट? So this is a situation of stalemate. This is a situation of deadlock. So what will happen? Okay. सिस्टम क्या था इसके पहले? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. यही तो था. इन जर्मनी पहले सिस्टम क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. इट मीन्स किंग प्लस नेशनल असेंबली. ये सिस्टम था. अब इसमें से किंग कहाँ भाग गया? जर्मनी. बच क्या गई? नेशनल असेंबली. किंग फ्लेड टू हॉलैंड. सॉरी, किंग कहाँ भाग गया? हॉलैंड. नाउ बच क्या गया? नेशनल असेंबली. नाउ व्हाट विल हैपन? किंग हैज फ्लेड. नाउ व्हाट विल हैपन? The representatives of this National Assembly will meet at Weimar. The name of the place is Weimar. Read this. The representatives of the National Assembly will meet at Weimar. Will meet at Weimar. Okay. वो Weimar में मिलेंगे. The representatives of National Assembly will meet at Weimar. Okay. And they will draft a constitution for the country. Since this constitution was drafted in Weimar, that's the state of Germany, so this constitution is called what? Weimar Constitution. Weimar Constitution. बात समझ गया ना? So the representatives of National Assembly will meet at Weimar and they will draft a constitution for Germany, and they will draft a constitution for Germany, and this constitution is known as Weimar Constitution. They will draft a constitution for Germany, और इसी constitution को हम क्या कहते हैं? Weimar Constitution. And by this constitution, now Germany was a democratic federal republic. It was said. कहा गया कि अब जर्मनी क्या है? By this constitution, now the new political system in Germany was what? It was a democratic federal republic. It was a democratic federal republic. This is the, okay, new political system. New political system. पहले क्या था? Constitutional monarchy. पहले क्या था? Constitutional monarchy. Now new political system. Germany is a democratic federal republic. Clear? It means in this republic there will be a parliament plus there will be a president. Okay, parliament plus president. So here, yeah, National Assembly means what? Parliament. यहाँ parliament हो गया और it will be headed by a president. This is the structure. Parliament and president. And king has fled to Holland. राजा भाग के चला गया Holland. Now who will sign this treaty of Versailles? King has fled. So the representatives of this National Assembly will sign this treaty. They will sign this treaty. And most of the members in this National Assembly or Parliament were Jews. पहली important बात. Anti-Semitism, Holocaust क्यों होता है? उसका पहला reason, read this, that most of the representatives, majority of the representatives in this National Assembly or Parliament were the majority of the representatives in this Parliament were Jews. Majority of the representatives in this Parliament were the Jews. कितना आसान concept है. Okay. Now tell me one thing, that in Paris peace settlement, क्या जर्मन नेशनल असेंबली की इतनी औकात और हैसियत थी कि वो प्रोविजंस के ट्रीटी को बदलाव करने की कुछ डिमांड रख सके? नो, यू वाज नॉट इन अ सिचुएशन ऑफ नेगोशिएशन. whatever will be imposed on you, you will have to accept. German National Assembly representatives signed that treaty. ठीक है? And that treaty was a humiliating treaty for all the Germans. ऐसा नहीं था कि इनके लिए humiliating नहीं था. It was also humiliating for them. So that treaty provisions were forced. We all know that TOV, what we see, that the provisions of treaty were forced upon. Clear? Provisions of treaty were forced upon. They were unilaterally imposed. Okay.
treaty was forced upon, they were unilaterally imposed, okay, and it was a humiliating treaty for all the Germans. It was a humiliating treaty for all the Germans. Okay, their national pride and sentiments, German national pride and sentiments were hurt by the provisions of the treaty. German national pride and sentiments were hurt by the provisions of this treaty. The concept is very simple. ठीक है? Got it? This part is clear. Who signed the treaty? Majority of the members. What was the new political system in Germany? This is clear. Now, the second part. Second part is what? So we all know that after the conclusion of First World War, after 1919, what about Germany? Will Germany face post-war economic crisis? Yes or no? Will Germany face post-war economic crisis? Yes or no? And this crisis will be more than the crisis faced by the victorious nations. जर्मनी के लिए तो ये क्राइसिस और भी बड़ी थी. जर्मनी ऑल्सो सफर्ड मिलिट्री एक्सपेंसेस, जर्मनी का इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस हुआ. ये सब कुछ होने के बाद जर्मन टेरिटरीज वर टेकन अवे, पॉपुलेशन वाज टेकन अवे, इंपॉर्टेंट जर्मन territories which were coal rich areas and plus war compensation amount. This will cripple the economy of Germany. पूरी तरह से जर्मनी की इकोनॉमी को क्या कर देगा? तबाह कर देगा. ओके, सो पोस्ट वॉर इकोनॉमिक क्राइसिस इज मोर सीरियस. इट इज मोर सीरियस in case of Germany. It is more serious in case of Germany due to the restrictions that were imposed on Germany. Due to the restrictions that were imposed on Germany. ठीक है, ये मामला और सीरियस था. Colonies of Germany were taken away. Navy was disbanded. Only a small naval fleet can be maintained. नेवी का रोल कहाँ होता है? ओशियन ट्रेड में भी हो सकता है. ठीक है, कॉलोनीज के साथ ट्रेड एंड कॉमर्स होता था. कॉलोनीज वेर टेकन अवे. कॉलोनीज वेर पुट अंडर द कंट्रोल ऑफ लीग ऑफ नेशन. इसका मतलब यहां पे भी क्या होगा? इकोनॉमिक क्राइसिस. व्हाट वी सी? इकोनॉमिक क्राइसिस. ओके, लॉस ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर. लॉस ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर. दिस विल हैपन. Economic activities will be disrupted. All these problems, the problems we have already discussed in case of Italy, the same point we can write here. That economic crisis hoga, loss of physical infrastructure. Okay, economic activities were disrupted. Lack of supply of essential goods and commodities, like we discussed in the previous chapter. बहुत सारे points repeat होंगी. Lack of supply of essential goods and commodities, ये भी होगा. lack of supply of essential goods and commodities, this will result in inflation. This will result in high scale unemployment. Okay, high scale unemployment. Poverty will increase. Food crisis will come. Poverty will increase. Food crisis will come. Poverty will increase. Food crisis will come. All these challenges. Now Germany is shrouded with all these challenges. And the government of Germany, it was unable to pay EMI also. EMI भी देने की स्थिति में नहीं थे. जो थोड़ा बहुत पैसा आता था वो इंस्टॉलमेंट में चला जाता था. तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आदमी इंस्टॉलमेंट देने से मना कर देगा. This will happen. Clear? So the amount of war compensation was very much high. And Germany was not even able to pay its installments. Clear? Okay, so amount of war compensation was very high. We all know what is the amount. याद है आपको? बताया था मैंने किसी को भी. 6600 million pound. It was very high, and it was very difficult for Germany even to pay the installments.
इंस्टॉलमेंट्स को पे करना भी बहुत डिफिकल्ट था। गॉट इट? इससे क्या होगा? डिससेटिस्फेक्शन एंड डिसकंटेंट ऑफ द पीपल विल इंक्रीज। और लोगों का गुस्सा किससे होता है? अगर ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं तो अपनी सरकार से होता है। इफ द गवर्नमेंट फेल्स टू एड्रेस दीज चैलेंजेस, the discontent of the people will be directed towards their government. They will start criticizing the weaknesses, inefficiencies of the government and the system. And the same started happening. Popular discontent, it means discontent of the masses, right? This point, popular discontent, popular discontent in the Germany, popular discontent in the Germany by these challenges, popular discontent in the Germany. And the government was unable to solve these challenges. Government was unable to solve these challenges. Okay, so the people will start criticizing the government for its inefficiency, right? The people will start criticizing the government for its inefficiency. लोग गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने लगेंगे for its inefficiency. The government was unable to solve the challenges and the people will start criticizing the government for its inefficiency. लोग क्रिटिसाइज करने लगेंगे. What will happen then? इसके बाद क्या होगा? Okay, who will take advantage of all this situation? पहली चीज, all these challenges in Germany, are these challenges creating the fertile conditions for the growth and popularity of communism? Yes or no? Yes. Economic challenges, social hardships, they are creating favorable condition for the growth of socialism. और लोगों के पास एक मॉडल पहले से ही आ चुका है. 1917 Russian Revolution. In Russia, what has happened? An ideology has become practical. एक आइडियोलॉजी थी सोशलिज्म, अब वो एक प्रैक्टिकल फॉर्म ले चुकी थी. Okay, so write this. All these conditions were favorable. All these conditions were favorable for the growth of communism in Germany. All these conditions were favorable for the growth of communism in Germany. All these conditions were favorable for the growth of, okay, communism in Germany. Okay, and the most affected class will be the class that is peasant class, worker class. So this peasant class and worker class will do what? It will start consolidating. The peasant class and worker class will start consolidating. Peasant class और worker class का consolidation शुरू हो जाएगा. It will start consolidating. Got it? Now, one important point here, that is, okay, देखो, are you getting this image on the screen? दिख रहा है? Okay, peasant and worker class consolidation started. क्या हुआ? Clear नहीं है? Ravi, is it visible? Okay, now let's discuss here. Nazi, we use the word Nazi. हम Nazi word use कर रहे हैं ना? This information is very much interesting. You must know this. Clear? This word we are using Nazi. Nazi. We are using this word Nazi. Look here, this is very interesting. Nazi means what? There are two terms. National Socialist. सोशलिस्ट को जर्मनी में क्या कहेंगे? सोशलिस्ट. नेशनल सोशलिस्ट. अब नेशनल से एन ए को निकाल लो और सोशलिस्ट से किसको निकाल लो? जेड आई को निकाल लो. नाउ दिस इज व्हाट? नाजी. ठीक है. जैसे क्लाइव को मजाक मजाक में लोग नवाब्स कहते थे, ब्रिटेन में चिढ़ाते थे उसको, और नवाब साहब आ गए, वैसे ही नाजी वर्ड जो है ना, ठीक है, ये एक तरह से इंसल्ट किया गया. किस बात का इंसल्ट किया गया? जैसे मान लो मैं कोई चीज क्लेम करूं, ठीक है,
और कल को अपने ही आइडल से पीछे हट जाऊं। मेरी बात समझ गया ना? तो यू विल स्टार्ट मेकिंग इंसल्ट ऑफ माई स्टेटमेंट्स कि सर ऐसा बोलते थे वैसा बोलते थे, कहने लगोगे ऐसा। द सेम हैपेंड विथ नाजीज ऑल्सो। वाई आई एम सेइंग दिस? मैंने कहा कि हु देखो, इन जर्मनी देयर इज अ राइप कंडीशन फॉर द ग्रोथ ऑफ सोशलिज्म, ठीक है, and socialist ideas will attract the majority of population, that is the class of peasant and worker. Now when German Nazi party is formed, okay, we are calling it Nazi as a matter of, लोग क्या कर रहे हैं इसको ridicule कर रहे हैं, criticize कर रहे हैं, तब नाजी कहा। Generally what is the name of the party? So look here, this is the name of the party, NSDAP. This is the name of the party. पूरा नहीं याद रखना है आपको, just I am telling you the concept here. NSDAP, N for National Socialist, it means N for National, S for what? Socialist, D for Deus, A for Arbiter, P for Party, P for Party, Party means party, in Germany it will be called party. तो इस पार्टी में जब ये पार्टी नाजी पार्टी बनी है तो इसका नाम क्या है? NSDAP, जिसमें सोशलिज्म वर्ड भी है, यानी हिटलर भी पहले क्या था? सोशलिस्ट था। तभी से सोशलिस्ट और लेफ्टिस्ट पे लोगों का भरोसा उड़ गया, कब पार्टी चेंज कर ले पता नहीं, ठीक है ना? तो यहाँ पे कौन है? ये भी कौन है? सोशलिस्ट ही है, नेशनल सोशलिस्ट, ओके, देन ड्यूज आर्बिट्ररी पार्टी, ओके, नेशनल सोशलिस्ट, नेशनल सोशलिस्ट। अब देखो, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट जर्मन वर्कर्स, German workers. In Indian, in our English, we can call it National Socialist German Workers Party. NSDAP तो उसका ओरिजिनल वर्ड से आ गया ना। In technical sense, in general sense, we can call this is what? National Socialist German Workers Party. और वर्कर्स और पीजेंट को कौन कौन से रिलेट करता है? सोशलिज्म। तो ये इसका अपना खुद का एक नेशनलिस्ट वर्जन है सोशलिज्म का। गॉट इट? And this is the workers party, peasant party. In this way it will gain popularity. Popular होने के लिए सबसे पहले किसी भी कंट्री में, today also in India also, if I want to become a leader, so first I will have to make myself popular at the grassroots level. मेरी बात समझ गया ना? अगर आप बड़ा लीडर बनना चाहते हो तो आपको आपकी पकड़ सबसे पहले कहाँ होनी चाहिए? पीजेंट और वर्कर्स में। व्हाट अबाउट द ओरिजिन, व्हाट अबाउट गांधी? Entry of Gandhi in Indian politics. Gandhi first experiment in Champaran. Champaran Satyagraha is what? Peasants issue. Then Ahmedabad mill strike, address the workers concern. Then Kheda Satyagraha, again peasant issue. समझ में आया कुछ आपको? Okay, peasant plus workers in Ahmedabad, in Gujarat, in Bihar, he became popular among peasant and workers. So before the emergence of Gandhi, the Gandhi's emergence as a national leader, he was a peasant leader and worker leader in India. सबसे बड़ी बात है, और ये हर लीडर के साथ, जितने भी बड़े लीडर्स हैं, अगर उनकी हिस्ट्री उठा के देखो तो आपको ये बात मिलेगी। मेरी बात समझ गए? यही हो रहा है नाजी पार्टी के भी साथ। नाजी पार्टी का अपना एक वर्जन है नेशनलिज्म का और सोशलिज्म का। इस पे डिबेट भी है हिस्टोरियंस के बीच में कि नाजी पार्टी इज व्हाट, लेफ्ट विंग और राइट विंग। ठीक है, उतना तकलीफ आपको नहीं दूंगा उस डिबेट की, बट दिस इज अ डिबेट दैट इसको हम लेफ्ट विंग माने या राइट विंग माने, ये भी एक डिबेट है। ओके, नाउ क्या मैंने बताया? एनएसडीपी, दिस पार्टी इमर्ज्ड इन आफ्टरमैथ ऑफ द जर्मनीज डिफीट इन वर्ल्ड वॉर 1। ये पार्टी कब आती है? 1918 के बाद, ठीक है। और ये क्या था? डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू राइट विंग पॉलिटिक्स इन यूरोप आफ्टर द रशियन रिवॉल्यूशन ऑफ 1917 combined the worker oriented politics with the rejection of conventional socialist internationalism. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझो। वर्कर ओरिएंटेड पॉलिटिक्स, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड नेशनल सोशलिज्म। प्लस जो रशिया में मॉडल है, रशिया किस चीज को प्रमोट करना चाहता है? कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, कम्युनिज्म, ग्रोथ एंड प्रमोशन ऑफ कम्युनिज्म एज एन इंटरनेशनल मूवमेंट। दुनिया के हर देश में कम्युनिज्म आ जाए, ये कोशिश किस चीज की है? कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की है।
जर्मनी में जो सोशलिज्म है इसका कोई ऐसा एजेंडा नहीं है. They don't have the intention to launch it like in the form of international movement. इनके खुद के अपने इश्यूज हैं, उन इश्यूज को सॉल्व करना है, अपने नेशनलिस्ट इश्यूज को एड्रेस करना है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, एक तरह से रिवेंज भी लेना है. जो इनजस्टिस ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस में हुआ है उसका क्या करना है, रिवेंज भी लेना है. So it is different from the technical meaning of that. Okay, you can say that international Comintern movement. उससे थोड़ा सा ये अलग है. The meaning is a little bit different. Okay, now we are entering into the concept. Now what will happen? Hitler was associated with this Nazi party. Hitler was associated with this Nazi party. Clear? And in Germany, what was happening? Socialist ideas, communist ideas were getting popularity. Socialist and communist ideas were getting popularity. Okay. So when socialist ideas or communist ideas will become popular, what will happen? It was a threat for the capitalist, for the business class, for the feudal lords, landowners. Clear? Now who can protect them from that socialist version? रशिया वाले सोशलिज्म के मॉडल से कौन बचा सकता है? जर्मनी का सोशलिस्ट मॉडल. और वो मॉडल को कौन लेके चल रहा है? जर्मन नाजी पार्टी. नाउ दे विल डू व्हाट? ओके, दिस कैपिटलिस्ट क्लास, कंजर्वेटिव क्लास इन जर्मनी विल गिव फंड एंड सपोर्ट टू नाजी पार्टी. इनको क्या मिल जाएगा? फंड एंड सपोर्ट. दे विल गेट फंड एंड सपोर्ट फ्रॉम कैपिटलिस्ट. And when they will get political funding and support, they will become powerful. Capitalists का पैसा लग गया, आपके पास क्या आ गया? Power आ गया. Now Nazi party is powerful. Now Nazi party will do what? Nazi party will gradually become more and more critical to some issues. More and more critical. Gradually they will become more and more critical. किस चीज की criticize करेंगे? What they will criticize? This is very interesting. Gradually they will become more and more critical. To what? Point 1. They will be more and more critical to the ruling party. This is like opposition. तो opposition किसको target करेगा? Ruling party को. So write this. They will become more and more critical to the ruling party and its representatives. Okay. They will become more critical to the ruling party and its representatives. Clear? Ruling party and representatives. And how they will criticize? So right, they will criticize this ruling party for their failure. They will criticize this ruling party for their failure in handling the economic challenges before Germany. They will criticize, okay, this ruling party for handling for failing to handle the economic challenges before Germany. यानी जर्मनी में जो भी इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं ये रूलिंग पार्टी उसको एड्रेस नहीं कर पा रही है. ठीक है. नाउ व्हाट दे विल डू? दे विल डू वन मोर थिंग. दे विल आल्सो क्रिटिसाइज दिस रूलिंग पार्टी दैट दे विल से दैट नाजी पार्टी विल से दैट दिस रूलिंग पार्टी इज अ काइंड ऑफ कॉन्स्पिरेटर. They have done conspiracy against the Germans. जर्मन के खिलाफ इन्होंने क्या किया है? साजिश किया है. They have joined hands with the victorious powers. They went to Warsaw to sign the treaty. Okay, and they did not resist the provisions of the treaty. They signed it deliberately. जानबूझ के साइन कर दिया. Because they are the conspirators. They have joined hands with the powerful nations of Europe. Victorious nations is British, France, etc. Okay, and they have signed the treaty, okay, because they are anti-nationals. ये गद्दार है, देशद्रोही है. इन्होंने जानबूझकर ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस पे साइन किया है. और ऐसा इसलिए किया है क्योंकि इस पार्टी में ज्यादा से ज्यादा लोग क्या है? ज्यूज. और ये ज्यूज जर्मनी के प्रोग्रेस के लिए बहुत खतरनाक है. These Jews are very much harmful for the progress of Germany. Okay, these Jews are the conspirators who are living in Germany and they are making conspiracy against the German people. ये वही लोग हैं जो जर्मनी में रह के जर्मनी के खिलाफ क्या कर रहा है?
कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द क्राइसिस दैट जर्मनी इज फेसिंग टुडे। तो क्या करना चाहिए? वाइप आउट द ज्यूज। आप ये बताओ, मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स आर ज्यूज। आपने कितनी चालाकी से क्या किया? ठीक है, फेलियर ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस की जिम्मेदारी किस पे डाली? रूलिंग पार्टी पे। देन इसके बाद क्या किया? ओके, यू हैव स्टार्टेड, यू कैन इनकरेजिंग द पीपल फॉर एंटी ज्यूज सेंटिमेंट्स। एंटी ज्यूज सेंटिमेंट्स लोगों में बढ़ाने लगे। दिस इज कॉल्ड प्रोपेगेंडा। इसको कहते हैं प्रोपेगेंडा। आपका मकसद सत्ता में आना है, लेकिन आपने सत्ता में आने के लिए, इन ऑर्डर टू कम टू पावर, इन ऑर्डर टू कम टू पोजीशन, आपने एक फिक्शन वाला एलिमेंट तैयार किया। फैक्ट्स प्लस फिक्शन। Fact is true that these people went to Versailles, they signed the treaty. This is fact. But what is propaganda? With the help of some facts, a fiction is created, a narrative is created. Clear? And in this fiction, in this narrative, one group is villainized. एक ग्रुप को क्या किया जाता है? विलन बनाया जाता है, right? And what happens? You start promoting hate speech against that particular group or the ethnic community or that cultural group. उस cultural group के साथ के खिलाफ आप पहले क्या promote करते हो? Hate speech. You will promote hatred against that group. And a time will come when the Holocaust will be done. मेरी बात समझ गया ना? So this is the beginning of Holocaust. Hatred speech is the beginning of Holocaust. अगर किसी भी कल्चरल ग्रुप्स के खिलाफ अगर हैट्रेड स्पीच सोसाइटी में हैट्रेड स्पीच प्रमोट हो रही है, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ हॉलोकास्ट। दिस इज व्हाट हिस्ट्री टीचेस अस। ठीक है, शुरुआत यहीं से होती है। ठीक है, दिस इज व्हाट प्रोपेगेंडा। So basically this Nazi party has three main issues, three main opponents. One opponent is what? The ruling party, क्योंकि इनको हटा के पावर में आना है. Second opponent is Jews, because Jews was the most progressive political and economic group in Germany at that time. उनके पास पैसा रुपया खूब था, वो काफी politically influential लोग थे. This was the point here, right? So they did what? Okay, they targeted Jews, anti-Jew sentiment. Or if you target one group, okay, if you will villainize one group, that this group is responsible for the misfortunes of the country, then the people can easily relate. ऐसी बातें लोगों को जल्दी समझ में आती है. मेरी बात समझ गया ना? जर्मनी के लोगों को भी बहुत जल्दी समझ में आई. पहले से ही एग्रेसिव नेशनलिज्म का इंजेक्शन लगा हुआ था, ठीक है, थोड़ा सा डोज बढ़ा दिया हिटलर ने. So this is the second group. And third group is what? Third enemy is what? तीसरा ग्रुप जो एनिमी है वो कौन है? कम्युनिस्ट. So there are three groups which are targeted by Nazi party. One is the ruling party, second is the Jews, and the third is the communist. One is the ruling party, second is the Jews, and the third is the communist. Third is the communist. Got it? Now the reasons you understand that why ruling party, why Jews. Clear? Most progressive political group of that time. तो अगर आपको पॉलिटिक्स में जाना है तो इनको हटाना पड़ेगा, तो देशद्रोही साबित करो. And the third is what? Communist. If you will launch attack against the communist, if you will try to stop the communist, who will give you funding? आपको फंडिंग कौन करेगा? सपोर्ट कौन करेगा? कैपिटलिस्ट. पार्टी के लिए यही तो चाहिए, ठीक है. अब देखो क्या है, अब इनका जो लीडर है हिटलर, लोग पहले से ही प्रॉब्लम में है. देयर इज इन्फ्लेशन, देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट, द पीपल आर फेसिंग सीरियस इकोनॉमिक चैलेंजेस. ओके, the condition of all, even the businessman, even the peasant, even the workers, the condition of all is worse. Okay, Germany's economic prosperity has lost. Now opposition का leader आएगा हिटलर, and he will deliver a speech. और आपकी स्पीच तब और भी ज्यादा पावरफुल हो जाती है जब रूलिंग पार्टी इनइफेक्टिव हो, ठीक से काम नहीं कर पा रही हो, और अपोजिशन का लीडर आके वादा कर दे. ठीक है, now Hitler will come and deliver a speech that when Nazi party will come in power, we will be able to solve all the challenges of Germany. The party and its representatives are responsible for the failure of Germany. Due to these people, these are the conspirators, anti-nationals.
The pride, national pride and glory of Germany had lost. Okay, we will never pardon these people. कभी हम माफ नहीं करने वाले हैं. So when Nazi party will come to power, Hitler promises people that I will ensure that I will see that not a single person will walk without a job in Germany. एक आदमी को भी मैं बेरोजगार नहीं रहने दूंगा. लोगों ने खूब जोर से तालियां बजाई. ठीक है, हिटलर ने कहा बस. Hitler was aware about the sentiments of the people. The people believed in the promises of Hitler. हिटलर ने स्पीच में और आगे डोज बढ़ाना शुरू किया. Hitler says that when Nazi party will come to power, when we will come to power, I will do what? Okay, I will reject, I will not accept the unilateral forceful provisions of Treaty of Versailles. मैं ट्रीटी ऑफ वर्साई के किसी भी प्रोविजन को एक्सेप्ट नहीं करूंगा. We will not pay war compensation amount. I will do what? I will tear the paper of this Treaty of Versailles and I will throw it into the waste paper basket. इसको रद्दी के टोकरी में फेंक दूंगा मैं ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस के प्रोविजन. और लोगों को ऐसा ही लीडर चाहिए, क्योंकि इसके पहले लोगों ने वो दौर देखा था. कौन सा दौर? एग्रेसिव नेशनलिज्म का. नाउ हिटलर विल से दैट these people, these Jews are responsible, okay, for all the misfortunes of Germany and we will have to wipe out the Jews from Germany. लोगों ने कहा वाह कितना अच्छा लीडर मिला है. okay, wipe out the people, wipe out the Jews. So in this way anti-Semitic propaganda was also spread by Hitler. okay, now Hitler will promise the people. अब और क्या promise करेगा? Hitler will promise the people that I will bring back the past glory of Germany. मैं जर्मनी के past glory को वापस लाऊं. okay, I will conquer all those territories which were previously part of Germany. I will take back all those territories. जो states territories जर्मनी का हिस्सा थे मैं उसको वापस लूंगा. Plus I will also conquer new territories. का जो जर्मनी का था वो तो वापस लेंगे ही. For this he used a word that is a greater German Reich. Whatever belong to Germany, Germany will take it. जो जर्मनी का था जर्मनी लेगा. Plus there is another term that is Lebensraum. It means Germany will add new territories also. नए territories भी लाएगा. And what about demilitarized zone? Hitler will say that we will not follow the provision of demilitarized zone. We will make our navy the powerful navy. okay, we will do what? We will make arms and weapons. We are not going to follow the orders of the victorious nations. Now the people of Germany, what has happened during Paris peace settlement? Their nationalist pride and sentiments were hurt. Now when they will listen to the speeches of Hitler, they will say that the time has come that we should bring this party in power. बदला तभी लिया जा सकता है जब कौन सी पार्टी पावर में आए? नाजी पार्टी पावर में आए. राइट? So the people decided that we will vote for the Nazi party. That when Nazi party will come to power, we will be able to take our revenge. Right? This will happen. Now what will happen? Nazi party becoming popular. Okay. Nazi party was becoming popular. Once Hitler also tried to what? Okay, that is called military coup. सैनिक तख्ता पलट भी करने की कोशिश की. एंड दैट इवेंट इन हिस्ट्री इज फेमसली नोन एज डियर हॉल पुश. ओके, एंड व्हाट विल हैपन आफ्टर दिस? इट वाज फेल्ड. नाउ हिटलर वाज पुट टू जेल. इसके बाद हिटलर को कहाँ डाल दिया गया? जेल में. इन जेल ही रोट हिज ऑटोबायोग्राफी दैट इज नोन एज मीन कैंप. उसने वो ऑटोबायोग्राफी लिखी. दैट वाज वेरी पॉपुलर, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बुक. ओके, he was jailed for 5 years, लेकिन वो 1 साल में ही बाहर आ गया था. 1 year and a few months he came out. Okay, and now what will happen? Elections will be conducted 1930 and 1932. Nazi party will get victory. Nazi party को क्या मिलेगी? Victory मिलेगी. Got it? This will happen. और क्या करेंगे नाजी पार्टी वाले? They will plan a conspiracy and they will do what? They will put Reichstag on fire. देयर पार्लियामेंट ऑन फायर. अपने संसद में ही आग लगा देंगे. ठीक है,
It's not clear that who did this, but probably who did this, Nazis did this. ठीक है, नाजीज ने क्या किया, वहां की जो नेशनल असेंबली थी उसमें आग लगा दिया. ओके, नाउ व्हाट विल हैपन, द प्रेसिडेंट वाज हिंडनबर्ग, प्रेसिडेंट प्लस नेशनल असेंबली यही था ना, तो प्रेसिडेंट वाज हिंडनबर्ग. ओके, और जब वहां पे पार्लियामेंट में, दैट इज कॉल्ड राइस्टेक, वहां पे आग लगती है, सो व्हाट विल हैपन, प्रेसिडेंट विल इशू सम इमरजेंसी ऑर्डर्स, और इस इमरजेंसी ऑर्डर्स में लोगों की इंडिविजुअल राइट्स क्या कर दी जाएंगी, सस्पेंड कर दी जाएंगी. ठीक है, president has issued this order, and after some time, after few months, what will happen, Hitler president को हटाएगा, he will become the leader, and he is not leader, he was the Führer. And what is the Führer, the leader who has absolute rights is known as Führer. तो पहले इमरजेंसी ऑर्डर से लोगों की इंडिविजुअल राइट्स ली गई, एंड व्हेन हिटलर कम्स टू पावर दैट इंडिविजुअल राइट्स आर सस्पेंडेड फॉर एवर. हमेशा के लिए लोगों के इंडिविजुअल राइट्स क्या हो जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं. गॉट इट. And this is what we can say is the emergence of Hitler as a dictator in Germany. ऐसे हिटलर डिक्टेटर बन. Now you'll write some points, then we will move ahead. ठीक है, क्योंकि स्टोरी भूल सकते हो आप. Have you written this point? Now write next point. Okay. Some important issues that we need to write here. Right. Three important, you can say that, targets of Nazi party. Okay. Right. Next point. That Hitler joined this party. In short, we can call it German Workers Party. ठीक है ना, वो नेम बड़ा डिफिकल्ट है. यू कैन राइट जर्मन वर्कर्स पार्टी और नाजी पार्टी. अच्छा देखो, ये क्यों क्रिटिसाइज करें नाजी, नेशनल सोशलिस्ट, बिकॉज ये अपने एजेंडा से क्या हो गए, डाइवर्ट हो गए. तो कुछ हिस्टोरियंस ने एज अ टर्म, मैटर ऑफ इंसल्ट, इनको लिख दिया नाजी. ठीक है, और यही वर्ड पॉपुलर हो गया नेशनलिस्ट. ओके, था ना, तो नाजी ऐसे ये वर्ड पॉपुलर. यस, राइट दिस पॉइंट. ओके, हिटलर ज्वाइंड German Workers Party in 1919. Hitler joined German Workers Party in 1919. Right. Hitler rose to prominence in this party. Hitler rose to prominence in this party. Hitler rose to prominence in this party. Okay. And Hitler also highlighted his program in his speeches. And Hitler also highlighted his program in his speeches. Hitler also highlighted his program in his speeches. Now, what were the programs here? Right, point one. A greater German Reich. R-E-I-C-H. A greater German Reich. Hitler also क्या था, highlighted this program. Point one, a greater German Reich. देखो, when you will read any book, this word will come again and again. German Reich, First Reich, Second Reich, Third Reich, Fourth Reich. तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, वो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ. राइट, so that in NCERT and other books, whenever you will read, you will find these terms are used again and again. So I am just discussing the concept with you. ठीक है, कि इस वर्ड से आपको परेशानी ना हो, so you must know. Okay, now this word, I told you that this will appear frequently. Okay, so you must know about this word, rake. What is the meaning of rake? Rake just simply means what? A rail or rain. This word we use frequently, that in the reign of this ruler and like this. ठीक है ना, this is rake. Now, this particular term is derived from the Germanic word which means rain or rain. So this is a German word for the same. Okay, this is a German word for the same. Okay, now it is used to designate what? A kingdom or an empire. In ancient India, medieval India, we also use this word. It is used to designate a kingdom or empire. तो जब रेक की बात करते हैं, so we generally call it as a kingdom or empire. तो देखो, Germany as an independent nation came in which year? 1870-71. पहले तो it was a group of smaller principalities, states and German territories. ठीक है, hundreds of parts were there. छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था. And previously it was the part of Holy Roman Empire.
So when German territories were part of Holy Roman Empire, in that phase, aggregation or aggregate of all German territories are known as First German Reich. कितना आसान है. जर्मनी तो तब था ही नहीं, छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था. तो जब होली रोमन एम्पायर के अंदर ये जर्मन टेरिटरीज छोटे छोटे टुकड़ों में हिस्सों में बटा हुआ था, तो अगर उन सबको हम एक साथ जोड़ ले तो दैट विल बी कॉल्ड फर्स्ट जर्मन रेक. क्लियर? तो कंफ्यूज नहीं होना है. नाउ एंड द जर्मन एम्पायर. ओके, हाँ, एंड द सेकेंड जर्मन रेक इज द जर्मन एम्पायर. इसके बाद देखो, राइट, सेकेंड जर्मन रेक कब होता है? ओके, सो आफ्टर होली रोमन एम्पायर. ओके, the Holy Roman Empire and the German Empire. After Holy Roman Empire, we all know Napoleon comes, decline of Roman Empire. Then what happens? German territories are again reconsolidated. मेरी बात समझ गया ना? 1830, 1848 revolution in France will have impact on Germany. The people will be united. 1848 there is a Frankfurt Parliament, वो भी होता है. The German territories will make a federation. Little German concept will be adopted. ये सब आपने पढ़ा है. तो उस टाइम में जो जर्मन टेरिटरीज हैं, वी आर यूजिंग द टर्म दैट इज जर्मन एम्पायर. और ये बढ़ते बढ़ते कब आ जाएगा? 1870-71 तक आ जाएगा. गॉट इट? दिस इज द जर्मन एम्पायर. 1870-71 के बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक, 1914-18 तक, दिस इज द सेकेंड रेक. ये क्या है? सेकेंड रेक. ओके, एंड व्हाट इज द थर्ड रेक? थर्ड रेक इज व्हाट? आफ्टर पेरिस पीस सेटलमेंट, ओके, German territories were taken away. Now when Hitler will come to power, he will do what? Extension of German territories and boundaries. ठीक है, जर्मन टेरिटरीज और बाउंड्रीज को क्या करेगा? एक्सटेंड करेगा. ओके, तो अंडर द लीडरशिप ऑफ हिटलर, अंडर द लीडरशिप ऑफ नाजी पार्टी, जर्मन टेरिटरी इज एक्सपेंडेड अगेन. दैट इज नाजी जर्मनी. तो नाजी जर्मनी इज नोन एज थर्ड रेक. ठीक है, तो थर्ड रेक जो हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, तो इट इज यूज्ड इन केस ऑफ व्हाट? नाजी जर्मनी. जर्मनी अंडर द कंट्रोल एंड लीडरशिप ऑफ हिटलर, ये थर्ड रेक था. क्लियर? फर्स्ट रेक होली रोमन एम्पायर, डिसइंटीग्रेशन ऑफ होली रोमन एम्पायर के बाद सेकेंड रेक. थर्ड रेक, थर्ड रेक इज व्हाट? अंडर द लीडरशिप ऑफ हिटलर. ये है थर्ड जर्मन रेक. फोर्थ जर्मन रेक टर्म इज ऑल्सो यूज्ड इन फिक्शन एंड सम पॉलिटिकल ह्यूमर, but it's not that much popular. Okay, but which is the most popular word which you will get in the books? Third German Reich. तो जो भी बुक आप पढ़ते हो वहां पे कौन सा वर्ड आपको मिलता है? थर्ड जर्मन रेक. तो इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है. थर्ड जर्मन रेक सिंपली मीन्स व्हाट? नाजी जर्मनी. whenever you are talking about third German Reich, we are talking about नाजी जर्मनी. क्लियर? अब हिटलर क्या कह रहा है कि फर्स्ट जर्मन रेक, सेकेंड जर्मन रेक, जितना हिस्सा जर्मन टेरिटरीज का था सब मैं लूंगा. दैट इज व्हाट? ग्रेटर जर्मन रेक. आई विल डू व्हाट? आई विल एनेक्स ऑल दोज टेरिटरीज व्हिच वर वंस अ पार्ट ऑफ जर्मनी, और which were where the German speaking people are living, where those people are living who are following the German culture. German races are the superior races. आर्य कहता उनको. German races are the superior races. दे आर द मोस्ट पावरफुल. ठीक है, इनका जीन ही कुछ इस तरह से डिजाइन है, ठीक है, कि ये दूसरों पे रूल करने के लिए बने, और इसलिए हम सारे टेरिटरीज को क्या करेंगे? वी विल डू व्हाट? वी विल री एनेक्स ऑल दोज टेरिटरीज. सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेटर जर्मन रेक. सो हिटलर प्रॉमिस्ड ग्रेटर जर्मन रेक. ठीक है, आप सोचो अगर आप खुद जर्मन होते और ऐसा लीडर ऐसा प्रॉमिस कर रहा होता, तो आप खुश होते इन दैट एज कि कितना शानदार लीडर मिला. बट दैट लीडर विल ब्रिंग जर्मनी ऑन द वर्ज ऑफ डिस्ट्रक्शन. विनाश की ओर ले जाएगा. नाउ सेकेंड पॉइंट, राइट दिस. प्रॉमिस टू रिजेक्ट, promise to reject TOV, Treaty of Versailles. He said that we will not, okay, accept the Treaty of Versailles. Promise to reject Treaty of Versailles. Right, next point. Promise to bring back past glory and to restore honor of German people. Promise to bring back past glory and to restore
pride and honor of German people, promise to bring back past glory and to restore pride and honor of German people. Okay, now the second point. Okay, read this. Lebensraum. Lebensraum. तो देखो, what does it mean? Greater German Reich means what belong to Germany, Germany will take. जो पहले जर्मनी का था, जर्मनी वो वापस लेगा. That is Greater German Reich. What belong to Germany? Wherever the German speaking people are living, we will take those territories. And what is Lebensraum? New additional territories we will also take. ठीक है? This is Lebensraum. Lebensraum means promise to add. Promise to add new territories or additional territories. Promise to add new territories or additional territories. That is what Lebensraum. Promise to add new territories or additional territories. यही है Lebensraum. समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? जो अपना था वो तो लेंगे, प्लस और भी लेंगे. ठीक है? जैसे मान लो एक छोटा सा एरिया है सुडेटनलैंड. पेरिस पीस ट्रीटी में सुडेटनलैंड दे दिया गया चेकोस्लोवाकिया को. चेकोस्लोवाकिया वाज अ न्यूली क्रिएटेड नेशन एंड इन सुडेटनलैंड जर्मन स्पीकिंग पीपल वर लिविंग. So German territory, Sudetenland was a German territory. It was given to Czechoslovakia. What Hitler will say? We will take Sudetenland back, where German people are living. जो जर्मनी का था वो हम लेंगे, बट सुडेटनलैंड किसको दिया गया था? चेकोस्लोवाकिया को. तो अब हमें चेकोस्लोवाकिया भी चाहिए, क्योंकि कुछ दिन तक सुडेटनलैंड आपके पास था. तो हमें क्या चाहिए? पूरा चेकोस्लोवाकिया चाहिए. गॉट इट? दिस इज हिटलर. ठीक है? हिटलर की साइकिल अपने घर में रख लोगे तो हिटलर कहेगा चूंकि साइकिल तुमने अपने घर में 10 दिन तक रखी है, इसीलिए मुझे अब तुम्हारा पूरा घर चाहिए. ओके, so taking the cycle back is Greater German Reich, and taking your house since you have possessed that territory is what? Lebensraum. This is Hitler. That we will get back our territories, plus we will also add new territories. Okay, right, next point. Okay. Right. No Jews will be considered as German citizen. No Jews will be considered as German citizen. Anti-Semitic campaigns, in bracket you can write anti-Semitic campaigns. Anti-Semitic campaigns. And what about the religious freedom of the people? Hitler will say that yes, we are giving religious freedom of the people, except a few. Those few who are threat for Germany, Jews. और भी एक दो ग्रुप्स हैं उसमें. ठीक है ना? तो कहता है रिलीजियस फ्रीडम सबको है, लेकिन सबको मैं कुछ को छोड़ के. ठीक है? तो ये कहाँ का रिलीजियस फ्रीडम हुआ? Is it universal religious freedom? No, it's not like that. Okay, so this is also one thing. Okay, right, next point. Okay, right. Hitler also started a newspaper, that is Radical Observer. Hitler also started a newspaper, that is Radical Observer. So it was like mouthpiece of the Nazi party. नाजी पार्टी को जो कहना होता था वो इस मैगजीन के थ्रू कह देती थी. Got it? It was like mouthpiece of Nazi party. It was Radical Observer. Okay, it was Radical Observer. Right, next point. Okay, propaganda against the communists and the Jews was one of the most important part here. Right, propaganda against communists and Jews was one of the most important part here. Propaganda against Jews was one of the most important part here. Okay, right, next point. 1923. An event in 1923. An event in 1923. This event took place in Munich, and this event is known as Beer Hall Push. Beer Hall Push. Push. This event is known as Beer Hall Push. Beer Hall Push.
And what is this event? Write this: an attempt to overthrow the ruling party. Military decoupe जिसको कहते हैं, an attempt to overthrow the ruling party. This was an attempt to overthrow this ruling party. An attempt to overthrow ruling party. Right, next point. This attempt was failed. ये attempt fail हो गया. This attempt was failed. This attempt was failed. Right, next point. Hitler was jailed for 5-year term. Hitler was jailed for 5-year term. Hitler was jailed for 5-year term. ठीक है, हालांकि बाहर वो कुछ टाइम में ही आ जाएगा. Okay, right. One more point, that in jail he wrote his autobiography. In jail he wrote his famous book, basically you can write, that is Mein Kampf. In jail he wrote his famous book, and the name of this book is Mein Kampf. ये बुक बहुत पॉपुलर हो जाती है. दिस बुक बिकम्स वेरी पॉपुलर, और इस बुक की वजह से हिटलर और भी ज्यादा पॉपुलर होगा. प्लस इस बुक के सेल होने से जो रेवेन्यू आएगा, हिटलर विल बिकम वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन जर्मनी बाय द रेवेन्यू दैट ही विल गेट फ्रॉम दिस. एंड न्यूली मैरिड कपल वेर गिफ्टेड दिस बुक फॉर फ्री. ठीक है, ताकि वाइफ अपने हस्बैंड को वॉर पे भेज सके आसानी से, उसका भी ब्रेन वॉश हो जाए. ठीक है, न्यूली मैरिड कपल को क्या होता था, ये बुक गिफ्ट दी जाती थी. फिर वाइफ भी पूछती रहती थी वॉर पे कब जाना है. ठीक है, बुक पढ़ने के बाद हस्बैंड का मन नहीं हो फिर भी वो जाएगा वॉर पे. ठीक है, ये जादू था इस बुक का. दिस वाज द मैजिक ऑफ द बुक मेन कैंप. राइट, नेक्स्ट पॉइंट. ओके, नेक्स्ट पॉइंट. राइट, elections were held in Germany in 1930-1932. I am only discussing the important facts. Main part is the ideology that I will discuss later. Elections were held in 1930-32. Read this. Okay. Nazi party emerged as one of the largest party, having majority of vote share. Majority of vote share. Nazi party emerged as the largest party with majority of vote share. Okay, right. Hitler was invited to become Chancellor of Germany. Hitler was invited to become Chancellor of Germany. Hitler was invited to become Chancellor of Germany. अब देखो क्या है, German National Assembly or Parliament. This is called, again a German word, this is called, okay, German National Assembly or Parliament, right? This is called Reichstag. Okay, this is called Reichstag, or Reichstag. Okay, Reichstag. This is called Reichstag. German Assembly or Parliament is called Reichstag. And now what will happen? Nazis will do a conspiracy and will put Reichstag on fire. इसी में आग लगा देंगे. Nazis will do a conspiracy and will put Parliament on fire. ठीक है, will put Reichstag on fire. Okay. Now the people assume that ये काम किसने किया था? Nazis ने किया था. Because इसके बाद क्या होगा? The president was Hindenburg, right? The president was Hindenburg and Chancellor was Hitler. President Hindenburg है, Chancellor is Hitler. Plus there is National Assembly and representatives of National Assembly. ठीक है, President Hindenburg, Chancellor was Hitler. और इसके बाद parliamentarians भी हैं. In simple words, there are representatives of this National Assembly. Now Hitler क्या करेगा? Hindenburg के कान में मंत्र भरेगा. Hitler will say, इतनी बड़ी घटना हो गई है, ओके, तो आप अपने इमरजेंसी पावर को यूज करो और क्या करो, ओके, यू मस्ट यूज योर इमरजेंसी पावर्स एंड सस्पेंड द, यू मस्ट सस्पेंड द बेसिक राइट्स ऑफ सिटीजन्स, इंडिविजुअल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स. तो ये काम किससे करवा देगा? वो हिंडनबर्ग से ही करवा देगा, राइट? So what will happen here? The basic rights of citizens were suspended as a result. Emergency, write this, emergency. Emergency will be imposed and the basic rights of citizens will be suspended. Freedom of speech, assembly, all this will be suspended. Now,
जर्मनी इमर्ज्ड एज अ पुलिस स्टेट। इमरजेंसी में स्टेट क्या हो जाता है? पुलिस स्टेट हो जाता है, जब लोगों के पास खुद के डेमोक्रेटिक राइट्स नहीं होते हैं। नाउ जर्मनी विल इमर्ज एज अ पुलिस स्टेट। ओके, जर्मनी विल इमर्ज एज अ पुलिस स्टेट। ओके, नाउ व्हाट विल हैपन? अब हिटलर कहेगा हिंडनबर्ग से, ठीक है, जब लोगों के राइट सस्पेंड हो गए तो आप क्या कर रहे हो? आप भी कर जाओ, आपका भी काम मैं देख लूंगा। नाउ व्हाट विल हैपन? ओके, हिटलर विल डू व्हाट? सो अगेन वी सी एन important change here, that Hitler will, 1934 is the year. Now Hitler will combine or assume the powers of both president plus chancellor. Now Hitler will have the powers of both president and chancellor. Okay, now Hitler will assume the power and responsibility of both. Hitler क्या बन गया? प्रेसिडेंट भी खुद ही बन गया, चांसलर भी खुद ही बन गया। इट मीन्स दिस लीडर नाउ हैज एब्सोल्यूट पावर्स एंड राइट, एंड द लीडर विथ एब्सोल्यूट पावर्स और राइट इज कॉल्ड फ्यूरर। जिसकी शक्तियों पे कोई भी अंकुश ना हो, दैट इज कॉल्ड फ्यूरर। इट मीन्स नाउ हिटलर वॉज फ्यूरर, एंड इन दिस वे हिटलर emerged as a dictator. Okay, so Hitler emerged as the dictator in which year? So the answer is 1934. 1934 में वो डिक्टेटर बन जाता है। ओके, नाउ इफ आई से दैट फ्रॉम 1934 टू 1945 Germany was Nazi Germany. So do you understand the context of this? 1934 से 1945 तक Germany was Nazi Germany. And when Hitler will become Führer, what he will do? अब जब यही फ्यूरर है, and Führer is the leader with absolute rights, leader with absolute rights. So do you think that there is need of any opposition? No, कोई opposition की जरूरत नहीं है। So what he will do, in a single night, all opposition leaders were killed, and not only opposition leaders, the leaders of his own party who were critical of his opinions and programs. जैसे आपकी पार्टी के कुछ लोग हो सकते हैं जो इन फ्यूचर दे कैन बी, ओके, दे कैन गो अगेंस्ट द पार्टी, तो इनकी लिस्ट बनवाया और क्या किया? ऑल अपोजिशन लीडर्स वेर किल्ड, एंड दोज members of his own party were killed whose opinion were not in sync with the opinions of Hitler. ठीक है, हिटलर अगर आम को अंगूर कहता है तो आप भी कहो। अगर आपने कहा कि हिटलर भाई तुम गलत हो, तो लिस्ट में नाम आपका आ जाएगा। ओके, ऑल वेर किल्ड, एंड दिस इज कॉल्ड द नाइट ऑफ लॉन्ग नाइव्स। एक ही रात में सबका काम तमाम, अपोजिशन खत्म, इलेक्शन की कोई जरूरत नहीं। दिस इज कॉल्ड द नाइट ऑफ लॉन्ग नाइव्स। दिस इवेंट इज नोन एज the night of long knives. Okay, all opposition party leaders were killed, and right, all opposition party leaders were killed. और दूसरी चीज क्या है? Okay, that his own party members were killed who were critical of his thoughts, were critical of his opinion. अब देखो what is the relation between fascism and Nazism. तो देखो, Hitler's ideas are also called fascist ideas. दोनों में एक कॉमन सा डिफरेंस है, एंड व्हाट इज दैट डिफरेंस? फासिज्म जो है, ठीक है, एंड नाजिज्म, फासिज्म इज द एल्डर सिस्टर ऑफ नाजिज्म। नाजिज्म की बड़ी बहन का नाम है फासिज्म, ठीक है ना? तो फासिज्म बड़ी बहन है, नाजिज्म छोटी बहन है, ऐसे समझो। तो फासिज्म इज इक्वल टू, राइट, नहीं सॉरी, नाजिज्म इज इक्वल टू, यस, नाजिज्म इज इक्वल टू फासिज्म प्लस racism. Very simple definition. Nazism is equal to what? Fascism plus racism. Why we are calling it racism? Because here we are talking about anti-Semitic campaign, anti-Jews campaign. Here we are talking about anti-Semitic campaign or anti-Jews campaign. This is racism. फासिज्म के जितने भी फीचर्स हमने डिस्कस किए थे, फॉर एग्जाम्पल इट्स डेमोक्रेटिक और एंटी डेमोक्रेटिक, एंटी डेमोक्रेटिक बताया था ना। फासिज्म में क्या डिस्कस किया था? डिक्टेटरशिप ऑफ लीडर। नाजिज्म में भी क्या होगा? डिक्टेटरशिप ऑफ लीडर। द स्टेट इज एवरीथिंग अबव एवरीथिंग एल्स, ओके, नथिंग इज बियॉन्ड स्टेट। यू हैव टू सरेंडर योर पावर्स फॉर द स्टेट, यू विल वर्क फॉर द स्टेट। पीस इज एब्सर्ड,
War is the natural duty of the citizens. Aggressive nationalism and extreme nationalism that we have discussed, all will come except one thing, that is corporate state. केवल corporate state का concept क्या है fascism में, it's not in Nazism. Got it? Corporate state वाला point क्या है particular, we will use it in case of fascism only. ठीक है ना? Nazism में क्या आ जाएगा? Fascism में एक element जोड़ दो, that is racism, that is called Nazism, anti-Semitic campaign. Okay, so this is the basic idea. Now in next class we are going to revise the concept with the help of some slides, and there I will discuss a lot of things with you. For example, what is the meaning of Nazi propaganda, what are the ideologies, what is their outlook or approach towards conservative elements in the society, how their socialism is different from the other forms of socialism, right? This all we need to understand, that what should we consider Nazism as, left wing or the right wing, what was the role of misinformation, what was the role of disinformation. Clear? This all we will discuss in next class, and we must know these ideologies. पता होना चाहिए कि नहीं बताओ? Socialism, democratic socialism, Fabian socialism, communism, Nazism, fascism, utilitarianism, orientalism, Anglicism, capitalism, ये सब हमें पता होना चाहिए. Then we will be able to write good answers. History पढ़ते हुए सिर्फ ध्यान नहीं रहना चाहिए कि history पढ़ रहा हूँ. Got it? So when you will have a good understanding of history, this will be helpful for writing good essay, for writing answers in the ethics. You will be able to give some example for substantiate your opinion. तो चीज़ें बहुत अलग तरीके से देखने की ज़रूरत है. ओके, बिल्कुल वैसे नहीं देखना है कि किसी ने बता दिया आपको कि आपकी स्ट्रेटजी तो बहुत बेकार जा रही है, वर्ल्ड हिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हो, मेंस में तो लास्ट ईयर क्वेश्चन ही नहीं आया. जो आपको ये सजेशन दे रहा है वो खुद ही वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ के बैठा हुआ है. So this is a competition, and this competition is a cutthroat competition. You cannot rely upon the teachers also. You will have to develop the kind of sense of inquiry and the rational outlook. Teacher क्या है? बाजार का हिस्सा है. Got it? तो आपको अपना खुद का थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा. ठीक है, नहीं तो कोई भी कहीं भी बेच देगा. ईस्ट इंडिया कंपनी से यही सीखा हमने. ठीक है, कि अपना प्रोडक्ट बेचा कैसे जाता है. Got it? Okay, so in next class I will discuss a lot of things with you, misinformation, disinformation, and so that you will be able to relate the concepts. कहीं ऐसे में nationalism पे लिख रहे हो तो you can use those concepts. We'll discuss everything in the next class. So this topic is not over yet. We will do revision, and in revision we are going to add many new dimensions in this topic. Okay, any doubt, any question, any one of you? Yes, there is a reason behind this, because of the similarity of, you can say that, main principles or beliefs. बहुत सारे ideas क्या हैं? They are similar. And Nazi party came to power in which year? 1934. Fascist party, fascist Italy का time period क्या है देखिए notes में. And Nazi Germany का time period क्या है? तो कौन बड़ी बहन हुआ? Who is elder sister? Got it? Okay. चलिए, any other question? Yes, please. देखो, this is very simple. For example, Germany as an independent nation will come to picture in the year 1870-71. इसके पहले तो Germany nation है ही नहीं. But those German territories or the German speaking people, first they were part of Holy Roman Empire. So these Germans will claim that we are the successor of Holy Roman Empire. Italians are claiming that we are the successor of Holy Roman Empire. ठीक है, कि हमारा इतिहास तो होली रोमन एम्पायर से जुड़ा हुआ है ना. Our history is related to that Holy Roman Empire. So that is our glorious history. Okay, so at that time all those territories which were the German speaking territories, we will make them part of Germany. जैसे ऑस्ट्रिया में भी जर्मन स्पीकिंग लोग रहते हैं. This I will discuss later. And Germany will claim on Austria also. ऑस्ट्रिया को भी हड़प लेगा वो, बिकॉज वहाँ जर्मन स्पीकिंग लोग हैं. कहा कि होली रोमन एम्पायर से ऐसा चलता आ रहा है. ठीक है, वो भी हमें चाहिए, राइट? And what will happen once the Holy Roman Empire will decline? We see another development during the Napoleon's time, Vienna Congress. Then we see that Frankfurt Assembly 1848. ये सारा हुआ. तो इस पूरे के पूरे फेज में जो जर्मन टेरिटरीज थी, दैट इज द सेकेंड जर्मन रेक. एंड थर्ड जर्मन रेक इज नाजी जर्मनी, 1934 से लेकर 1945 तक.
This is Nazi Germany, Third Reich. So historians generally use most popular terminologies Third German Reich, Nazi Germany. First or second, it is less used. Or Fourth Reich, it is okay, minimum use. Okay, ये fiction या दूसरी जगहों पे use होता है Fourth German Reich. So the most popular terminology is Third German Reich, that is Nazi Germany. So if you'll get these terms in book, there is no need to be confused. Reich means rail. Okay, ये मतलब होता है. Got it? The simple idea. Second Reich, ठीक है. And Nazi Germany is the Third Reich. This is the simple idea. ठीक है. And territories kept on changing. ये भी हमें पता है. Territories kept on changing. Okay. So that's why Third Reich is used in the most popular sense. Any other question? समझ में आया? Got it? Outlook towards Weimar. Exactly. Conservative elements, they will get support of conservative elements also. ठीक है ना? Nazism will also get support of conservative elements. So this part I will discuss in the next class. ठीक है ना? Conservative elements. So we will discuss like on the slides, so it will become clear. A lot of things. समझ में आ रहा है? Are you getting the topics? क्या ये हम बुक के फॉर्मेट में पढ़ रहे हैं? ऐसा लग रहा है जैसे आफ्टर डिस्कशन यू आर एबल टू रिटेन समथिंग, यू आर एबल टू थिंक, यू आर एबल टू राइट, ऐसा हो रहा है? ओके, थॉट, यहाँ पे कुछ थॉट डेवलप हो रहा है, तो दैट विल बी हेल्पफुल. ठीक है, ये बिल्कुल नहीं सोचना है क्वेश्चन कितने आ रहे हैं. मेरी बात समझ गया ना? आपके अंदर क्या आप सीख रहे हो, व्हाट यू आर लर्निंग, यू विल बी एबल टू रिलेट. यूपीएससी मेंस एग्जाम इज ऑल अबाउट राइटिंग. कितने मार्क्स का होता है सोचो? इट्स ऑल अबाउट राइटिंग. यू आर राइटिंग फॉर 3 hours एंड अगेन 3 hours इन अ सिंगल डे. Okay, so for that we will have to prepare. Answer writing is the second stage. First stage is what? Development of thoughts and ideas in our minds. Okay, so that we will be able to relate the concepts. So that's why I am taking a little bit more time. Okay, but this is the basic purpose of okay my teaching. You are live, so you are able to interact. आप अपने questions पूछ ले रहे हो. Otherwise, after some time, this will be recorded lecture. Okay, so I will not be able to take interactive session again because I will teach the entire GS 1 by 1. ठीक है, सब कुछ पढ़ाऊंगा, 4 optionals पढ़ाऊंगा और सारी चीज़ें recorded lectures के फॉर्म में इंटरनेट पे अवेलेबल हो जाएंगी. तो मुझे दोबारा कोई मॉड्यूल पढ़ाने का टाइम नहीं मिलेगा. एंड ट्रस्ट मी, वॉट एवर यू विल लर्न हियर, ओके, these are the excellent lectures. I'm not boasting because I have worked hard to develop these lectures. ठीक है ना? Using the pedagogy, how you can learn better, बहुत सारी चीज़ें इसमें include है. ये सिर्फ lecture नहीं है. ठीक है? So I have worked on all those aspects and that's why I say that make a running note. There is no need to add more and more books. बिल्कुल नहीं लाना है. Okay? That will destroy the basic purpose of our lecture. Content बढ़ेगा तो आप revise नहीं कर पाओ. कंटेंट बढ़ने के साथ आपकी राइटिंग स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. गॉट इट? हमेशा ध्यान रखना है. आवर कंटेंट शुड बी ओके वेरी कंसाइज, which we can relate, which we can use, okay, in our answer, in our points, right? Thanks to all of you. Welcome.